यहाँ हम देख रहे हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसका पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। आज हम आगे की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम कौन सा चैप्टर देख रहे थे? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री देख रहे थे। तो उसके अंदर हमने 5 क्वेश्चन देख लिए थे उस क्लास के अंदर ही। अब 6वें क्वेश्चन की बात करते हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन K3FeCN6 इज +3, ठीक है। Coordination number of copper in cupramonium sulfate is +4. The oxidation state of Ni in NiCO4 is 0. Effective atomic number of Ni in NiNH3 whole 6 plus 2 is 38. PtNH3 whole twice Cl2. The number of symmetrical isomers are 2. Complex MABCDEF of शो आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल दोनों शो करता है। एथिलीन डायमीन इज एन एग्जांपल ऑफ डैश लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन पोटेशियम ट्राई ऑक्सोलोएटोक्रोमेट थर्ड इज 6, which is a monodentate ligand. F minus is a monodentate ligand. Formula of the complex trans ethylene diamine cobalt third sulfate is COEN3 whole 2 SO4 whole 3, which is the hexadentate ligand. EDTA is a hexadentate ligand. CrCl3.SXH2O is an example of dash isomer, hydrate isomers, ठीक है। CONH3 whole 5 Br SO4 and CONH3 whole 5 SO4 Br. So which type of organism? Ionization isomerism. The number of halide ion in PtNH3 whole 3 Cl2 BrCl will be 1. The primary valency of iron in K4FeCN6 is 2. Hemoglobin is a coordination compound having central metal atom iron. Coordination number of Cr3 plus in the complex CrH2O4 Cl2 is 6. The oxidation state of cobalt in Na3CONO6 is 3. The complex CONH3 whole 5 ClSO4 will give a white precipitate with BaCl2. Which of the following does not ionize? PtNH3 whole twice Cl2 does not ionize. IUPAC name of Zn2FeCN6 is zinc hexacyanoterate second. नेक्स्ट बात करते हैं अगले चैप्टर की। तो अगला चैप्टर क्या था हमारा? थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। द ट्रांजिशनल स्टेट इन द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इज डैश ज्योमेट्री। कौन सा ज्योमेट्री होता है? स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होता है। ट्रांस इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय पोलराइजेशन थ्योरी, आयनाइजेशन थ्योरी, पाई बॉन्ड थ्योरी। नहीं, सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन थ्योरी और पाई बॉन्ड थ्योरी की हेल्प से ट्रांस इफेक्ट को एक्सप्लेन किया जा सकता है। द ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट Bn इज रिलेटेड विद द स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट B1 B2 B3 डॉट Bn बाय द रिएक्शन बीटा। बी बोल दिया हर जगह ना, बी नहीं बीटा बोलते हैं उसको, ठीक है। बीटा का साइन होता है बीटा इक्वल टू β1 इंटू β2 इंटू β3 डॉट डॉट बीटा, इन सभी बीटा को मल्टीप्लाई किया गया है। द स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड बाय द लिगेंड्स विच हैव हायर चार्जेस, ठीक है। The stability constant of the complex is also known as formation constant. Trans effect is used for preparing only trans complex, both cis and trans complex, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which has the strongest trans effect among the following? तो Cn minus has strongest bond effect, ठीक है। The ligand substitution reaction in the square planar complex pursued by dash mechanism, SN2 mechanism. Levelite complexes are those which permit exchange of ligand. Which one of the following complex ion has the highest stability constant at 298 Kelvin? CdCN4 2 minus has highest stability constant, ठीक है। In coordination 6, the type of hybridization is R D2sp3 sp3d2 दोनों होते हैं, तो बोथ पे आ जाएगा, ठीक है। In a D3 system in octahedral field, the crystal field splitting energy
value in dq is 12. The number of unpaired electrons in a d6 low spin octahedral complex is 0. According to crystal field theory, bonding between a central metal ion and ligand is purely ionic. The complex species FeF6 3- is a high spin complex. Ligand with a large negative charge and small size causes crystal field splitting larger. Number of unpaired electron in Cr3 plus ion is 3. Among following which is the weakest ligand? इन दोनों में से I माइनस weakest है, ठीक है। जो भी ऑप्शन दिया उसके अंदर कंपेयर करना, ठीक है। dq value is 8 for which of the following configuration? d2. For a low spin complex, value of crystal field splitting energy should be dash than pairing energy, high than pairing energy. Complex having metal ion with a dsp2 hybridization have shape square planar. Ni2 plus ion in complex NiCN4 2- has hybridization dsp2. Cis and trans complexes of the type PTA2X2 can be distinguished by Kornakov test. The stability of the complex does not depend upon mass of the complex. Trans effect is explained by polarization theory. The stability constant of complexes are determined by which of the following method? Spectrophotometric method, ठीक है। The reaction PtCl4 2- with 2 equivalent of ammonia produces cis PtNH3 whole twice Cl2. The correct order of the ligand Cn- Cl- NH3 and NO2 regarding to trans effect is NH3 less than Cl- less than NO2 less than Cn-. Which metal ions show higher stability constant? इन दोनों में कंपेयर करें तो Cu2 प्लस का स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज़्यादा होता है. द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोलराइजेशन थ्योरी ऑफ ट्रांस इफेक्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रीनबर्ग. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब. द रोल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्स डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ लिगेंड, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ऑल ऑफ दिस सभी पे डिपेंड करता है. Spin only magnetic moment in the case of Ni2 plus is rooted Bohr magneton, in which complex dsp3 hybridization occurs. CuCl5 3-. Strongest ligand in spectrochemical series is, देखो ये स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोला है, लेकिन आप कंपेयर करोगे किसको देख के? ऑप्शन को देख के. ठीक है, तो इन दोनों में ये स्ट्रॉन्गेस्ट है. गिव द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द कॉम्प्लेक्स Fe(CN6) 4 - 0 है, कोई नहीं है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 0 Bm मतलब बोहर मैग्नेटॉन वैल्यू? तो Fe2 प्लस का. When coordination number is 4, the type of hybridization are tetrahedral, square planar, दोनों पॉसिबल है तो बोथ पे आ जाएगा. Thermodynamic stability is determined by stability constant. The most polarizable ligand is I-. The most stable complex ion is AgI2-. CuNH3 3+ complex is a stable complex. In case of stepwise formation, constant K1 upon K2 is dash than 1 more than 1. ठीक है. Class metals form stable complex with ligands like I- PMa3 S2- etc. B. Cn- is causing trans effect than I- more. Cn- is causing more trans effect than I-. Which of the following cell form an octahedral complex? D4 low spin cell. ठीक है. The correct Irving-Williams order is Mn2 plus less than Fe2 plus less than Co2 plus less than Ni2 plus less than Cu2 plus greater than Zn2 plus. ठीक है. Which of the following is paramagnetic? CuF6 3- is paramagnetic. What affect the crystal field splitting energy? The nature of ligand. According to crystal field theory, the nature of the metal ligand bond is purely ionic. बात करते हैं आखिरी यूनिट के बारे में, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म के बारे में. ठीक है, तो अब P2 कॉन्फ़िगरेशन एज डैज स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेबल पॉसिबल स्टेट पॉसिबल 3 स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टेट्स आर पॉसिबल. ठीक है. फॉर वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन द स्पिन मल्टिप्लिसिटी विल बी इक्वल टू 2. द अलाउड ट्रांजिशन are characterized by radius is equal to 0. According to Laporte section rule, dd transition is sometimes allowed.
Total number of energy levels corresponding to L equal to 2, S equal to 1 are 15. The value of EL obtained by LL coupling for P4 configuration is 1. The spin multiplicity for a D3 system is 4. According to Hole formulation, the number of holes in oxygen configuration is 2. If S is the absolute value of the spins of individual electrons, then spin multiplicity is given by 2s plus 1. The unit of magnetic moment Bm Bohr magneton is Bohr magneton and is equal to 92.74 into 10 के पावर माइनस 24 जे मतलब शायद जूल, इसका यूनिट नहीं मालूम, ठीक है, जे पर टी लिखा हुआ है, टी का फुल फॉर्म नहीं मालूम, जे का भी फुल फॉर्म नहीं मालूम, जे शायद जूल होता है क्या, कंफर्म नहीं है इसलिए बता नहीं सकते, ठीक है, बस यूनिट ये होता है। क्यूरी विल्स लॉ इज एक्स जीटा बोलते हैं, जीटा पैरा विच इज इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस थीटा। द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ टी आई 3 प्लस ई इज इक्वल टू 1.73। The spin magnetic moment is 5.92 for which ion among the following Fe3 plus Mn2 plus दोनों के लिए ये है। The value of mu s is 1.73 for which of the following Sc2 plus V4 plus Ti3 plus सभी के लिए है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following has largest dipole moment? NH3 has largest dipole moment. Optical isomerism obtained from a compound having n asymmetric carbon atoms are 2 to the power n. 2 asymmetric carbon atoms are present in tartaric acid. An optically active substance is sucrose. The ground state term symbol for F is 2p3/2. If less than half filled configuration, the value of J is mod S minus L minus S. Which of the following transition is forbidden? N to pi star. A transition like S2 arrow x dash p dash is a laporate allowed because del L is equal to plus minus 1. The term symbol for D1 electronic configuration is 2D. The term symbol for P2 configuration is 3p, 1s, 1d, all of this, ठीक है। According to spin section rule, the permitted transition is 3t1g to 3t2g, which is not a magnetic behavior. Piezoelectricity is not a magnetic behavior. The magnetic permeability is given by H. The value of a spin magnetic moment is calculated using mu s is equal to under root n plus 2, ठीक है। n क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज ऑक्सीजन। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर डैश बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, आर अट्रैक्ट बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। Unit Debye unit is of the order 10 to the power minus 18 ESU. Optical activity is a purely constitutive property. SCl bond is nearly 34.56% ionic in character. Tartaric acid is optically active substance. Dipole moment of monatomic gas is 0. तो इसी के साथ हमारे पूरे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट होती है। आप इनको अच्छे से देख लीजिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।